चलो आओ बैठो। चल भाई बैठ केतन, बैठो पृथ्वी भैया। बैठ गए? हाँ चालू करो। हाँ चालू करो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज का वीडियो है एक मिनट। क्या हुआ? मुझे भी तो आने दो वीडियो में। 4 mad brothers with 1 sister होना चाहिए ना। तू जा अपना पबजी खेल और टिकटॉक बना अपना जाकर, हमारे वीडियो का कचरा मत कर यहाँ पर। अबे रहने दे, ठीक है। तू एक इंट्रो का देखो देते, ठीक है? ओके। तो देखो बोलना है हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। ए कचरा मत कर, तू जाके अपना टिकटॉक ही बना। हट। रुक, ठीक है मैं बोलता। बे टूट जाएगा ना कुछ। ठीक है मैं शुरू करूँ? चलो। तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज का वीडियो है टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो वेलकम चैनल टू माय गाइस। अरे रुको, मैं बोलता। मैं तो बुलाई नहीं बोलता। अबे कुछ भी बोल। सब मुस्कान ने दिमाग का दही कर दी। नींबू पानी। अबे अंग्रेजों की औलाद हो, ये भी स्क्रिप्ट में लिख लेते हैं, क्यों इंग्लिश की माँ बहन कर रहे हो तुम लोग? चलो सब छोड़ो, अब हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा वीडियो आज आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें आज आपको बहुत मजा आने वाला है आगे, और एंड तक देखने के बाद आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। So guys, today we are here to show you some step-by-step tips and tricks that will help you become more efficient and will save a lot of your time and effort. So let's not waste more time and let's dive into the first trick. The first trick is text replacement trick. So guys, to use this feature, you need to add a shortcut and a replacement in your settings. We will show you exactly how. So go to settings, then click on general and then click on keyboard. After that click on text replacement. Now click on the plus sign to add a new phrase. For example, let's add 4 mad brothers in the phrase and let's put FMB as a shortcut. Then click save. Now you can see I just have to type FMB and press space and the whole phrase automatically appears on the screen. This is very useful trick and saves a lot of time and effort. The second trick is reachability feature. So guys, the phones are getting bigger and bigger and so are our fingers. Sorry guys, only phones are getting bigger, so it's hard to access the top part of your screen with the use of a single hand. So go to settings, then click on accessibility, then click on touch, then turn on reachability icon. Now the magic guys, just lightly double tap the home button and the upper part of the screen will drag down, and now you can easily access the whole upper half of the screen. And in newer iPhones with no home button, you can just swipe down on the bottom of the screen to enjoy this feature. Third trick is use keyboard as a trackpad. It's not easy to place the marker for erasing or typing new letter using fingers on the touchscreen. Easy way around is to just long press on the keyboard area and just hover to the part where you want to add or erase. So you can see I just used my keyboard as a trackpad, which makes the life very easy. Fourth trick is the Assistive Touch. To activate this feature, go to settings, then click on accessibility, then click on touch and then turn on Assistive Touch. Now you will see a white spherical button on the screen, which you can place anywhere on the screen anytime you like. Now if you click on this button, you will get 6 options which are customizable to your preference. As you can see, by default we have home button, control center, device button, where we have few options: Siri call button, screenshot button and lock screen button. All these features without any use of any physical button, but just at the touch of your thumb. Fifth trick is one-handed keyboard. You don't need to do any changes in settings to enable this feature. While typing,
Long press or 3D touch on the emoji or smiley icon present at the bottom of the keyboard just beside the space button. Now you will see 3 keyboard icons at the bottom. First is the left-handed keyboard typing option, middle one is regular keyboard option, and to the right is the right-handed keyboard option. So as you can see, this makes typing easy with one hand. तो गाइज होपफुली आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चलो ठीक है, वीडियो की बात जाने देते हैं। अभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा आपके एक फ़ायदे की बात मैं बोल रहा हूँ, इस संडे, आने वाले संडे को हम गिव अवे का इवेंट रख रहे हैं। तो गिव अवे में हम 16 GB पेन ड्राइव देने वाले हैं और इसमें कोई झोल नहीं होगा, कोई फेक गिव अवे नहीं होगा। ये जो भी होगा आपके सामने होगा, इसका हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारा पहला गिव अवे है, इसके बाद और अपकमिंग गिव अवेज होने वाले हैं। तो बात है पार्टिसिपेट कैसे करें, इसकी इंस्ट्रक्शन आपको हमारे अगले वीडियो में मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये गिव अवे हमारे सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही एलिजिबल रहेगा। टिल देन मिलते हैं, सी यू, बाय बाय, जय हिंद।